Hello, hello. Are we live? Hello, hello, hello. Hello, hello. Are we live? Yeah. Hello. एक सेकंड यार. Hello. या ऑल राइट. राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे वी विल अंडरस्टैंड टर्बो रिपो और बेसिकली मोनो रिपोज बेटर, राइट? राइट. So let's quickly start without wasting any time. तो आपने अब तक अगर मेरी स्ट्रीम को फॉलो किया हो थोड़ा बहुत, तो हमने दो एप्स बनाए अपने टर्बो रिपो में, मोनो रिपो में, मैकओएस पोर्टफोलियो और 3GS पोर्टफोलियो, राइट? तो दिस इज मैकओएस पोर्टफोलियो and this is a 3GS portfolio where I'm using the 3D guy, right? 3D मॉडल्स, और ये दोनों हमने होस्ट कर रखे हैं अपने डोमेन पे. वाओ, व्हाई इज दैट नॉट रीचेबल? वाओ 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 वाओ. Okay, it was there, but I don't know why it's not showing up. But yeah, at least this is our primary portfolio. This one, right? और जो अपना 3GS वाला ये सेकेंडरी है. तो आई डोंट नो व्हाई इट्स डाउन राइट नाउ, बट आई विल लुक एट इट लेटर. क्योंकि आज का हमारा फोकस पोर्टफोलियोज नहीं है, राइट? हमारा फोकस टर्बो रिपो है. तो लेट मी क्विकली गो टू माय चैनल क्विकली. तो दिस इज द थर्ड टाइम वेयर जिसमें हम लोग डिस्कस कर गए होंगे टर्बो रिपो के बारे में. सबसे पहले in this video we were discussing about turbo repo, and then in this video, what video मतलब ये भी लाइव ही आए थे, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे टर्बो रिपो के बारे में, और अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आप पहले मतलब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप पहले वो दोनों देख के आए, एंड उसके बाद हम उसके बाद आज का देखें, अगर आपने नहीं देखा है. इफ यू आर नॉट वॉचिंग इट लाइव, मतलब आई बिलीव नो वन इज वॉचिंग लाइव राइट नाउ, राइट? तो या तो आज का हमारा टास्क है, विल पब्लिश अ पैकेज एंड विल कंज्यूम दैट इन आवर एप्स. तो अब आप पूछेंगे हम ऐसा क्या करेंगे, राइट? तो हाँ, ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज दी रेपो अक्षर गर्ग, तो जिसमें मैं अपना पोर्टफोलियो, वेबसाइट और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स डालूंगा. तो अगर आप पहले से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 3GS पोर्टफोलियो इंपोर्ट किया था, तो उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे, बेसिकली ब्रशअप किया था एंड ऑल, राइट? तो वो इस कमिट में है, आप सर्च करके देख सकते हैं what all changes I made, right? There were quite a few. तो yep. तो आज का हमारा टास्क है to publish a package, internal package, and consume that in our apps. So let me quickly show you the need of it. So these are my two portfolios. This is more recent one, and this is थोड़ा सा पुराना, right? तो let me quickly skills का एग्जांपल ले लेते हैं हम, right? तो यहाँ पे कुछ कुछ स्किल्स हैं, right? And if I go here, यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं, एंड देयर इज डिस्पैरिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस किए हैं. बट लेट्स से इफ सम यूजर कम्स टू दिस वन और दैट होस्टेड वेबसाइट, तो उसको दिखेगा कि अरे अलग अलग है ये तो, राइट? सिमिलरली इफ यू गो ऑन एक्सपीरियंस, राइट? तो यहाँ पे उतना नहीं है हालांकि, बट प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं. जैसे प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स
चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ डेटा पड़ा हुआ है, राइट। तो डिस्पैरिटी है, एज यू कैन सी, लेट मी शो यू, राइट। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है। नाउ इफ आई वांट टू मेक देम इवन, so I'll have to work very hard, right? पहले मैं उसमें एडिट करूँ, फिर इसमें एडिट करूँ आके, right? So rather, what I have planned here is I'll publish a package for these two portfolios and possibly if any other portfolio in future. तो उसमें भी हम यहीं से कंज्यूम करेंगे and I'll change if there's any change. I'll change that here in this package, राइट। और फिर वो उन दोनों में रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। तो पहले हम अपना पैकेज बनाएंगे। तो पोर्टफोलियो डिटेल्स, मैं क्या करूँगा, एक ही पैकेज बनाऊंगा और उससे ही में ही सारी चीज़ें पुट इन, और उसके बाद उसको हम पब्लिश कर देंगे, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम दिस, राइट। तो नेम, वर्जन, फाइल्स, ये तीन चीजें हमें चाहिए क्योंकि कुछ भी आप पब्लिश कर रहे हो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पैकेज डॉट जेसन, दैट्स वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम, राइट। सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप, चाहे आप एक नोड ऐप ही क्यों ना बना रहे हो, राइट। तो ये हो गया अपना ये। तो @repo रहने देंगे ताकि हमें पता रहे कि दिस इज अवर इंटरनल पैकेज। यहाँ पे हम चेंज करेंगे पोर्टफोलियो डिटेल्स, ठीक है। वर्जन 0.0 रहने देंगे एज ऑफ नाउ, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट टू फाइल्स में करेंगे हम इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस कहाँ से आएगी, यहाँ पे विल क्रिएट एन इंडेक्स डॉट जेएस फाइल एंड अभी तो हमारे पास सिंस कुछ नहीं है तो विल जस्ट console डॉट लॉग हेलो फ्रॉम पैकेज, hello from internal package, right. Now we have to consume this in our apps, right. So let's start with 3js portfolio। तो सबसे पहले तो हम आएंगे यहाँ पे, तो हम खोलेंगे टर्मिनल, स्टार्ट अनदर टर्मिनल, राइट। तो npm install portfolio details workspace, कैसे लगाते हैं ना, फिल्टर कैसे लगाते हैं या फिल्टर लगाना भूल जाते हैं, हाउ डू वी, या लाइक, तो फिल्टर। अब मुझे ये कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करना है दोस्तों, मुझे ये इंस्टॉल करना है मैक ओएस पोर्टफोलियो में, और मुझे ये इंस्टॉल करना है 3js पोर्टफोलियो में, ठीक है। एक सेकेंड, हल्का सा सिंटैक्टिकल एरर आ रहा है, लेट्स क्विकली सी। Okay, it should be an include, not include, right। फिल्टर भी तो हो सकता है, लेट्स सी। Okay, I believe I did it the right way।
Also we are on branch. What branch we are on, ये भी देख लेते हैं. Mac OS 3.js4 पे है. So that this is the common branch. Okay, let's see कहाँ पे आया पैकेज. ठीक है. कौन सा पैकेज में चेंज हो गया भाई ये. ओके, आई बिलीव कुछ तो गड़बड़ कर दी. Let's see if include is the right command. Turborepo install package workspace. अरे यार सही तो लिख रहा था. तो पहले वर्कस्पेस ही लिख रहा था. Never mind दोस्तों, let's fix this. wait, कुछ गड़बड़ हो रहा है. कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. I don't. Okay, तो एक जगह तो आ गया. Okay, दोनों इंस्टॉल हो गए. Lol dudes. So let me quickly go and discard all the changes. Yes, discard in package JSON. ये पड़े रहने दो. मैं बस पोर्टफोलियो की भी डिस्कार्ड कर देंगे. Right, let's take it one by one. Pointlessly, let's not mess it up. And use the same command.
never mind, bro. I'll just see JS portfolio. Wow, bro, what the hell? This came through, but that is not coming through. Wow. Never mind, never mind. कोई बात नहीं दोस्तों. Let's not waste a lot of time. Let's just quickly come paste it here. Right. And what we will do is we'll just come out of it. Delete this. Uh, delete this. Right. And we are gonna, let's see. यहाँ नहीं है ना. ठीक है. आओ. तो अब हमें क्या करना है यहाँ से. हमने index.js बना ली. राइट. अब हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए टू वर्क अराउंड. राइट. in our package. So we'll start with creating a skills folder जिसमें हम index.js डालेंगे और हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे कॉन्स्ट स्किल्स का और हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे डिफॉल्ट स्किल्स. ठीक है. we'll do that. Now skills में हम एरे बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स का. what type of object? But what type of object? What type of object do we want to create is the question. So what we'll do is npm I run dev. Let it run. तो सबसे पहले तो स्किल का नाम होगा हमारी जो भी हमारी स्किल्स है. राइट. और उसके बाद हम इमेज का भी नाम लेंगे कि हम उस पर आई मीन स्किल है तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ इमेज भी तो रेंडर करनी है. राइट. जैसे कि हाँ यहाँ पे कर लेते हैं स्किल्स. तो हर उसके साथ एक इमेज इज अटैच. राइट. और इफ वी लुक एट आवर पब्लिक फोल्डर तो हम स्किल्स में एक इमेज डालते हैं. तो दैट शुड बी इन लाइन विद दिस इमेज नेम. राइट. So name, let's start with NextJS. It could be anything, right? Because we are working on NextJS, and I feel like I am strong enough. If someone interviews me, so I should be able to crack it. NextJS dot png. Right. Now, what is your next skill? Name. Next skill is. इसको कर लेते हैं ऐसे. तो कर लेते हैं ऐसे. Control G. It will be faster. Right. React.js, of course. Image. Name हम बाद में एक साथ ही रख लेंगे फिलहाल. Let's just keep it like this.
skill name in Node.js, and then image name, right? Next is skill name express.js, image name, we'll figure it out later. ठीक है, उसके बाद मोंगो, क्या हो गया भाई प्रिटियर तेरे को इंस्टॉल करने पे लगा तो रखा यार, क्यों लोड ले रहा है? राइट, एक्सप्रेस जेएस आता है अभी मेरे को। उसके बाद स्किल नेम हो जाएगा मोंगो डीबी, will put some image name as well later, of course. कुछ name PostgreSQL आता है तेरे भाई को। image name, look at it later. ठीक है, Vite.js, or just let it be. We are not gonna put Vite.js, and neither we are gonna put SAS. Let's put TailwindCSS, image name, get it later, bounty, name, get image name, कितनी हो गई? दो, दो चार, दो छः, दो आठ हो गई, राइट? So what all we omitted? We did not write Vite, we did not write SAS, and we did not write GitHub. Still, we are even. How? Next, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसके बाद चार में सुनिए सबसे ना. Next, React, Node, Express, MongoDB, PostgreSQL, Tailwind. अच्छा Vite, Prisma भी लिखना नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं. Prisma भी मेरा इतना strong नहीं है. Commenting with this, right? Let's see. Installed. Yep. Right in time. और देखते हैं क्या क्या स्किल्स है मेरे पास. मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट सीजेएस भी नहीं लिख रहे हैं, रिडक्स भी नहीं लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस लिखने का कोई मतलब नहीं है. ये सब तो राइट. So I believe this is where we are gonna stop with our skills, and कोई आ जाएंगे. अब पीएनजी के नाम लिखते हैं. नेक्स्ट रिएक्ट की पीएनजी का नाम होगा हमारा react.js.png, node.js png, cool. Express.js, I believe.
Yep. And then MongoDB PNG. PostgreSQL. Tailwind PNG. Git dot PNG. तो ये सब अपनी स्किल्स हो गई, एरे हो गया, राइट, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग इट। अब अगर हम इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसे इंपोर्ट कहाँ करेंगे, हम इसे इंपोर्ट करेंगे index.js में, राइट। इंपोर्ट स्किल्स फ्रॉम स्किल्स जो एकदम बगल में पड़ी है, एंड वी आर गोना डू एक्सपोर्ट स्किल्स, कूल। तो बिफोर दैट let's just refresh this to see if our package is working, at least our package is working, तो हमें उसके लिए console लिखना चाहिए, राइट। तो अच्छा हाँ, सॉरी, तो I have installed our package here and here as well, इसके लिए इतना लफड़ा हो रहा था। Now we are gonna use it somewhere, right? So let's go to source app.jsx and just uh, console.log. Let's see, not like this. If I do import skills, uh, but ऐसे from @repo portfolio details, ऐसे क्यों? क्योंकि हमने उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं मारा है और ऐसे ही हमने उसे एक्सपोर्ट किया है, तो राइट, दैट्स व्हाई। नाउ अब skills is an array, right? So we can do this skills.map skills console.log skills.name, right? And I believe we are in CJS portfolio, so we should be able to see something here. So let's see, ठीक है, सारी स्किल्स आ गई हमारी और ये हेल्प फ्रॉम द इंटरनल पैकेज आ गया। तो कॉन्ग्रेट्स दोस्तों, वी आर एबल टू वर्क, I mean publish our internal package and use it in one of our apps, right? So that's great job friends, right? एक सेकंड दोस्तों, पानी पी लो यार। तो डिक्लेयर्ड क्या है, अपने फोल्डर का नाम क्या है, पोर्टफोलियो डिटेल्स पैकेज इंस्टॉल्ड पैकेज इन आवर पोर्टफोलियो
in our portfolio of apps. ठीक है. Uh, publish portfolio details as declared skills in our package. ठीक है, ना सही है, ना सही है दोस्तों. और कुछ? We are gonna delete this publishing package and declaring skills. और एग्जैक्ट लेटर, एक लेटर और ऊपर नीचे. तो पब्लिश पोर्टफोलियो डिटेल्स पैकेज उसे इंस्टॉल किया हमने और हमने डिक्लेयर कर दी अपनी स्किल्स बना. पुश इट टू आवर गिटहब. राइट, वी आर डूइंग CI/CD, continuous integration and development deployment. तो समझो यार, तो सेटिंग नहीं बन रही है यार. I've relocated to a new place. Believe you all can. अगर तुम लोगों ने यार पिछले लाइव देखे होंगे तो you people can clearly see it. Yeah, much more space for me now. Right. तो हमने स्किल्स डिक्लेयर कर दी. Now what we are gonna do is हमने उसे कंज्यूम भी कर लिया. Now we have दो रास्ते. Either we can declare a rest of the variables, that is experience, education, or project details, or we can consume whatever we have written. So let's do one thing. Let's publish all the variables at once and we'll consume them at once. Right. So what is the next thing? Experience की spelling क्या होती है? And dot yes, cool. Now again it will be const experience will be an array जो कि हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे यहाँ से. एंड जैसा कि हमने स्किल्स के साथ किया था, सेम वे वी आर गोना डू विद एक्सपीरियंस. Yes. Now let's array of what? Array of objects. We start with company, which is import. Since single object array, but hopefully future में I'll be able to edit it, tenure or maybe duration 2017 say present. That is how I'm writing here. Am I using August as well? I mean the month. So 2021 the current, right? I believe यहाँ पे भी वही है.
है यहाँ पे अगस्त 21, नेवर माइंड, सॉरी 2021, 2017 में कॉलेज में था, सॉरी। Details, and it will be an array. Now for that I'll have to quickly refer my resume. तो कहाँ है मेरा, अच्छा 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 अच्छा, sorry, that I can't pull up. हाँ, इसको मैं बड़ा करूँ, .NET वाला है क्या, never mind friends. Oh, that is something. ये है ना, क्यों नहीं दिखा रहा है, okay, and since I have opened it, I'll pull up the role as well, and I'm gonna put it here, right. जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे इन सिमिलर फैशन, एंड सो विल बी एबल टू यूज, राइट। नाउ एक्सपीरियंस के बाद आता है अपना क्या, एक्सपीरियंस के बाद आता है अपना प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये तो बहुत रैपिडली चेंज होंगे बिकॉज आई हैव क्वाइट अ फ्यू projects in my mind which will start developing very soon, very soon I would say. Project, I believe that is cool enough. So क्या, पानी खाली है बोतल, है ना, तो this is cool enough I believe. Let me just not just right. I believe this is cool enough. So in similar fashion, import project, and we are gonna push projects here. और क्या बचता है, स्किल्स हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन अ कांस्टेंट, बट ठीक है चलो, तो एजुकेशन
dot index. Oh, sorry, not dot index.js. I believe अगर मैंने उस टाइम इतना सब कुछ सेंसिबली किया, okay. I mean, of course, it's a variable. I mean, it's a constant, right? It's not gonna change it now. So it makes no sense. Const education equals to. Mm, I just create an object. Or maybe just create an array to keep it. Create an object. Education में institute national institute of technology Patna. Institute full name. Institute short name. IIT Patna. Like duration 2017-2021 और that's pretty much it, I believe. और कुछ थोड़ी है. कोर्स क्या किया था, that I believe does not matter now. uh, education course education education. Sure. Right. Achievement. Achievement. Yes. Cons. All right. So achievements में object and we'll go to title. I mean, can't think of any other object structure because
अभी एक ही अचीवमेंट है, राइट? द टाइम I'll have better achievements, I'll definitely change the object structure accordingly. Details. तो ये हमारे अचीवमेंट्स हो गए एज ऑफ नाउ। और अचीवमेंट्स हो गए, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गया, राइट? नाउ there will not be any disparity when I talk about these things, right? Let me just quickly close all of them. And since I mostly took it from macOS portfolio, few of features as well. So we'll quickly start with, I'll just show you. Let me just correct, this is correct. So commit and push, we push everything to GitHub. Uh, yeah, quickly grab all of this and paste it. Uh, Declaring all other variables in our init package declared achievement education experience init package file for English. Yeah, so we pushed it, right? That is pretty much sorted as of now. अगर आपको किसी को भी थोड़ा बहुत कुछ भी समझ नहीं आया, please let me know. Also, I'll quickly recap everything थोड़ी सी देर में. I just want to show you how to consume all of these details, right? So I'll go with uh, skills only. I know I have pushed it to GitHub, but I don't know why I pushed it to GitHub. ठीक है, चलो. Now let's go to sections. Close everything here, and we'll look for skill section, right? Alright. तो ये अपना इस वाले पोर्टफोलियो की बातचीत चल रही है अभी, नॉट दिस वन. तो अब हम इसमें स्किल्स को अपडेट करेंगे, बिकॉज उसने स्किल्स मैकओएस पोर्टफोलियो से उठाया है. तो आई जस्ट हैव टू फिक्स थिंग्स हियर. तो लेट्स सी, स्किल सेक्शन में आ गए हम. ये कोड बहुत पुराना लिखा हुआ है. इनकमिंग एनिमेशन स्किल बॉडी, या so we go to skill body जहाँ पे we are importing skills from this. तो सबसे पहले तो we'll remove this. We are on import skills
from our repo, portfolio details and skills.map. Makes sense. Also tells, perfect. Yeah, right. So I believe that will change things. Yes, it has changed. Now let's quickly hop onto skills. Okay, at least name is fine. Image things we'll have to fix. Okay, no big issue. So item dot name background image skills item dot icon. Yep. So सबसे पहले तो we'll change the word item to skill. Like makes much more sense. Or I believe image name was the right name. So देखो most of the things came, but these two things are new, so they are not here. Let me just quickly go to skills. I mean, I can even delete which are not Node.js. Like इससे अपना ultimately वो कम होगा overhead. Skills से हमें क्या क्या उठाना है, हमारे पास क्या नहीं था, Next.js और PostgreSQL. So I'll just quickly copy these two and we'll put it here. I believe this should work. But since if we make any change to public, it does not rebuild it. Yep, here we are, looking good on the skills. So that is how you consume an internal package in our apps in package repo. So I really wish और hope आप लोगों को समझ में आया हो. But just in case अगर नहीं आया है, so let me quickly give you a small recap, right, so that you people understand. सबसे पहले हम पैकेजेस में आए. तो मैंने आपको जो वीडियोस दिखाए थे अपने स्लाइड्स, उसमें we discussed कि these packages can be commonly shared between our apps. ठीक है. तो हमने what was the need, how did the need came, right? The need was कि इसमें हमारे दो पोर्टफोलियो थे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. तो क्या बोलते हैं, डिस्पैरिटी आ रही थी दोनों में. देयर वर सम थिंग्स न्यूअर इन द न्यू वन, और कुछ पुराने में पुरानी चीजें थी. एंड लेट्स से इन फ्यूचर इफ थिंग्स चेंज, इट वुड हैव बीन अ वेरी हार्ड टास्क फॉर मी कि पहले मैं आके मैकओएस में चेंज करूँ, फिर सेम चेंज आई गो फॉर 3JS पोर्टफोलियो. It would have been a hectic work. So what I devised an idea was I'll create a package with all the variables such as achievements, education, although education is a constant, but yeah, right. Experience, which is a variable again, projects again, it's gonna change, skills, multiply, changes right very quickly. So whenever I make a change, I'll now with this approach, I'll have to make the change at one place only. Let's say I have to update a skill, I'll just come here, change here, and it will be reflected in both macOS portfolio and 3JS portfolio, right? So that is the first thing. It was a need for us to create a package, right? Now how we did, first of all we created a folder, portfolio details and packages, created a package JSON because that's
heart of any JS application basically. तो हमने यहाँ पे नेम दिया, we put @repo just to not get confused between external packages and our internal packages. Now with this, I'll always know that this portfolio details is something which I have written, and yeah, version again 000. No say problem. I'll update it to 1.0.0 after this. Private true. Files. What files am I gonna expose? So file I'm gonna expose is index.js. Here what I have done, I have imported all the different variables and just exported them at, with the making it a single entity. Okay, so I'll take a small example only, skills. We went to skills में, skills in the in index.js, which is inside of skills. I have declared an array and I have exported all the, I've put every skill of mine and I've exported it, right? So lastly, my index.js is exporting everything, right? Now how to consume this in our apps? So we went to our apps, we installed a dependency with the same name as this thing, right? We installed it. You can put a star because it's an internal package, so you always know. You can put it like this. You can hard code, right? However you feel, right? I felt it right this way. Right. So we installed this package in both of our apps. Let me quickly show you. Yeah, yes, right. So that was the first step, installing a package in our app. Then I went, and then now it works as any other package or library which you import, right? You go to a file where you want them. So let's say I wanted it in my skill body, right? So I wanted all my skills in my skill body. So I just imported skills from our repo and I consumed the data whichever was written in skills, right? So here it is, name, image name, or the two properties of the object, right? So skills.map skill, right? And as you can see, skill.image name and skill.name. So that is how this works. So I really hope आपको ये सब समझ में आया हो, right? And that is it for today. Similarly, we can consume all other variables which I've declared, which obviously I'm gonna do, but then again it's a repetitive task for anyone who is here to learn, right? So I'll do it offline. And if you are really interested in watching how and what I did, this is the repo, uh, Akshatgarh. I'll just put the link in the chat. You can find the same in our description as well. So yeah, that's pretty much it for today, right? I hope you all liked this stream, got to learn something new, and if you did like it, subscribe the channel, right? I come live. I try to come live every day and do some code. Last few days have been जिसमें थोड़ा सा there were breaks, but yeah, no problem. We'll start fresh from tomorrow. From tomorrow, I have a new project idea which I'm gonna start developing. So you can join me there, right? बाकी मिलते हैं आपसे दोस्तों फिर अगली स्ट्रीम में, ठीक है? चलो, राधे राधे.